Welcome to part 2 of Pro Trader Talks on addictive trading. जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, एन एडिक्शन इज समथिंग जहां कोई एक्टिविटी जब भी आप करते हो वो एक्टिविटी इज से आपको स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन मिलता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते करते साइकोलॉजिकल और इवन फिजिकल डिपेंडेंसी बन जाता है। और जनरली हम कोई एक्टिविटी को एडिक्शन तभी लेबल करते हैं जब भी व्हेन दीज पीपल वांट टू दे सीक आउट दिस एक्टिविटी even in the face of a negative or a destructive consequences. तो ये जो एक्टिविटी स्टॉप करने की एबिलिटी हम में नहीं रहती, इवन व्हेन दोज कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन दे स्टार्ट इंटरफियरिंग विद आवर लाइफ, इससे हम एडिक्शन बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया कि एडिक्शन का मीनिंग क्या है। और तो अभी हम इस पार्ट में, इस एपिसोड में ये देखेंगे कि हम एडिक्शन से डील कैसे करें। दैट्स सो इम्पॉर्टेंट। ये एक 4 स्टेप प्रोसेस में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी विच विल हेल्प यू डील विद एडिक्टिव ट्रेडिंग और you can be any kind of addiction. Step number 1, identify the problem. It is so important to admit that you are into addiction, and it is all the more important to get away with all the excuses and all the rationalizations. कि आप the fact is that जब भी हम addiction से गुजर रहे होते हैं, the idea is to accept it that we are powerless. हम powerless हैं, इसीलिए हम एडिक्शन को हम अपना पूरा पावर दे चुके हैं। Then why give excuses and why rationalize it? Just identify and admit it that you are addicted. The main point is that you have to be willing to be unchained and free to be addiction free. वो जो willingness होनी होती है वो होनी चाहिए. That's important. Step number 2, and this is a little harder than step number 1, is to close your trading account. I know this may sound harsh and it may sound shocking और आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप हो गया, बट द आइडिया टू डील विद इट इज दैट आप सबसे पहले अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कीजिए। उसके अंदर, एक्टिविटी के अंदर रहते हुए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद इट। स्टेप नंबर 3, एंड दिस गाइज इज द हार्डेस्ट वन, सबसे ज़्यादा कठिन है, ये है कि इट इज़ टू एक्नॉलेज दैट यू नीड टू गेट हेल्प फॉर इट। बिकॉज हम सब में एक प्राइड होती है, एक ईगो होता है जो हमें बताता है कि यार मैं अपने आप से हैंडल कर लूँगा, मेरे पास इनफ विल पावर है, आई हैव अ लॉट ऑफ विल पावर, आई विल डू इट ऑन माई ओन। बट एडिक्शंस वुड नॉट हैव अकर्ड इन द फर्स्ट प्लेस इफ विल पावर वाज सफिशिएंट टू प्रिवेंट इट। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एडिक्शन, is that right? So telling yourself that you can manage your own addiction itself is a form of denial, and this itself is a form कि आपने फर्स्ट स्टेप तो लिया ही नहीं है। That is why आप जानते हो जब भी अल्कोहल का एडिक्शन होता है, there are groups called Alcohol Anonymous in the West, और सबसे पहला स्टेप वो यही लेते हैं कि they help you acknowledge that you are powerless against alcohol, and the next step is that अल्कोहल से कंप्लीट मुक्त करवा के, रुकवा के, म्यूचुअल सपोर्ट से सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट हेल्प्स यू लीव अल्कोहल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। देयर आर बुक्स, देयर आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, देयर इज काउंसलिंग। यू कैन लर्न टू आइडेंटिफाई योर थॉट्स एंड योर बिहेवियरल पैटर्न्स जो आपके एडिक्टिव बिहेवियर के पीछे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको ये करने में हेल्प करेंगी। यू कैन ऑल्सो लर्न टू आइडेंटिफाई योर क्रेविंग्स इन एडवांस, एंड देन you can channel all these things into productive direction. पहले से identify करके इसको productively use कर सकते हैं. That's the key. And step number 4, and this is a very important step and my favorite one, which is to take one day at a time. Just say to yourself every single day that today is not the day that I am going to trade compulsively. एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से डॉक्टर वेन डायर से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं जब भी हम मैराथन भागते हैं, सपोज कोई 21 किलोमीटर का मैराथन, देयर कम्स अ पॉइंट वेयर you just break down in the middle of the marathon, say somewhere between maybe 16 to 18 kilometers. And at that point of time, when you're about to break down, you do not ask yourself, okay, will I be able to complete the next 6 or 8 kilometers, whichever would be pending? You won't do that. But you will ask yourself, will I be able to put my foot down in the next step?
and then the next step, and then the next, and the next. This is how you keep yourself asking questions in the middle of it. And before you do that, before you know it, you've accomplished great things. So, one trade at a time, one day at a time. That's the way to go about it. The idea is to take on little difficulties when they're still easy. Dr. Dad batate hain. So, let's try to do great things while they are still small and they've not yet become great. Guys, taking all these above steps, they are so important and they're extremely simple. Let's revise them. Step number 1 is to identify and admit that you are addicted. Step number 2 is to close your trading account. Step number 3, acknowledge that you need help and get help. And step number 4, take one day at a time. These steps will help you regain a measure of control over your life, and it will help you end all the negative consequences of addictive trading that you're going through. If you find yourself unable to control your trading, and if you find all the emotions and financials and social consequences mounting on you, then that, guys, it's not a passion for trading. That is an addiction for trading. So just take the action right away. Do the right things. And do it for yourself. Do it for your loved ones and do it for your finances. Exchange कीजिए. आप इतने सारे ट्रेड्स देते हो, एक लास्ट ट्रेड सबसे बढ़िया ट्रेड कर दीजिए. And that trade is to exchange your addiction for control. And I promise you, that will be the best trade you could have ever made. Guys, I wish you joy and abundance in all you do.